Getting some big updates coming in. We are counting down to PM Modi's address in the Rajya Sabha later on in the day. Union Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju has launched a fresh attack on Rahul Gandhi. Rijiju has said that Rahul Gandhi, who claims to care about the welfare of the OBCs, must be aware that the popular representation of OBC population is Prime Minister Modi himself. So that's a big update coming in right now on Republic TV viewers. And we're getting you these back-to-back updates. PM Modi will be speaking later on in the day. And ahead of that, we see that the Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju has launched a fresh attack on Rahul Gandhi. Rijiju has said that Rahul Gandhi, who claims to care about the welfare of the OBCs, must be aware that the popular representation of OBC population is Prime Minister Modi himself. And I want to go ahead and play out exactly what Kiren Rijiju said a short while back. सबसे बड़ा ओबीसी का चेहरा खुद प्रधानमंत्री है, वो दिखता नहीं उसको, और वो दुनिया का सबसे पॉपुलर नेता है आज के दिन में, वो दिखता नहीं है। राहुल गांधी जी अंधे हो गए क्या कि प्रधानमंत्री जी का चेहरा को वो दिखाई नहीं देते हैं? सबसे बड़ा ओबीसी का चेहरा है। हम खुद भी एक एसटी है, आज संसदीय कार्य मंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ। हमारे जो राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी जो कानून मंत्री के रूप में भी काम कर रहे हैं, वो शेड्यूल कास्ट है, वो दिखते नहीं है उसको। A day after exit polls indicated an edge for the BJP, Congress has said that the polls may have underestimated the Aam Aadmi Party. Congress leader Sandeep Dixit has said that they are disappointed with the polls and that the party will easily receive 17 to 80% vote share. And he also says that the Aam Aadmi Party may not prove to be as weak as the numbers suggest. So back-to-back updates coming in right now on Republic TV viewers. Now, remember, the exit poll numbers are showing a trend there, and they're saying that the BJP has an edge. Aam Aadmi Party will not get the numbers it wants, but we're getting some reactions coming in right now on those exit polls, where we see that Congress leader Sandeep Dixit has made that statement. I just want to go ahead and play out that exact reaction from Sandeep Dixit. अगर आप एग्जिट पोल्स ही माने तो ठीक है, उनकी सरकार बन रही है, लेकिन मेरा ये फीलिंग है कि एग्जिट पोल जो हैं शायद आम आदमी पार्टी को उतना नहीं आंक रहे, ज्यादा कमजोर आंक रहे हैं। मुझे नहीं लगता इतना खराब उनकी स्थिति रहेगी अगर जिस तरीके का ट्रेंड ये बताया जा रहा है। और ऑल्सो जो मुझे निराशा हुई है एग्जिट पोल से कम देख के, कि मुझे लगता है कि कांग्रेस को 17-18% वोट आराम से मिल रहा था, लोगों में जो रुझान था, क्या हम वो वोट नहीं ले पाए या उसको लेने में कमजोरी रह गई, ये हमें देखना चाहिए।